So she carried the trauma of that pain into this life. वो energetically pain यहाँ पे transfer हो गया, और उस सेशन के बाद she did not feel the pain. Like, कई बार रिग्रेशन में ऐसे हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं चीजें. देन एक और केस जो आया था उसमें दैट लेडी Parul, she had met her husband when she was 16 years old. And she was at that time, जो ये रैली होती है ना, मोटर रैली, she had won that. इतनी go getter थी वो, इतनी smart थी वो. And she met her husband then, and he was 10 years older to her. And he was not settled. Naturally, she was very young, so parents did not allow the match. कि पहले पढ़ लो, कुछ कर लो, then only you can get married. So then but 10 years later, when she was 26, she got married to him. Jabardasti, parents were still not supporting. But the moment she got married to him, अब 10 साल की relationship के बाद भी, the moment she got married to him, she started fearing him. उसको समझ नहीं आ रहा था कि इससे मुझे डर क्यों लग रहा है. The moment he used to come home or whenever he's around her, तो उसका fear जो है ना बढ़ता ही जा रहा था दिन पर दिन. She met me 6 years after her marriage. She had a 4-year-old son, और उस time she was in such deep depression कि वो बच्चे का ध्यान भी नहीं रख पा रही थी. And she was terrified of her husband by that time. कहती उसके पाँव की आवाज आती है सीढ़ी पे और मैं थर थर कांपने लग जाती हूँ. So in regression, she saw that they were in reverse roles. She was the husband and the husband was the wife in that lifetime. And the wife was not faithful. And once she just after killing her husband, she ran away with her lover, taking away all the jewelry also. So treachery happened in that institute of marriage. That got triggered when she got married. तो उसका जो यहाँ पे जो है ना टेरर रिएक्शन शादी के बाद ही शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था, क्योंकि 10 years की रिलेशनशिप वाज वेरी गुड, so they were very happy with each other, but the moment they got married, ये सारा कुछ शुरू हो गया. और after the session, her fear came down almost 70%. Like over the following days, 10-15 days, she reported back to me. बहुत down हो गया था उसका fear. पूरा नहीं गया था क्योंकि आदत सी पड़ गई थी डर लगने की. तो that's why it remained with her. So जब past life का role है कि it is literally excavating your mind, अंदर घुस के जो है ना पुरानी memories को निकाल के लाता है. तो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. तो अगर आप यू आर फीलिंग अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स, जिसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला जिनके लिए, या बहुत फोबियाज है, इरेशनल फियर्स हैं, तो जो कि किसी कन्वेंशनल थेरेपी से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो देन पास्ट लाइफ कैन हेल्प. आई एम नॉट से दैट इट विल हेल्प, बट इट कैन हेल्प. So, because the images that you see, that can help to resolve it. Okay, now let's talk about what is karma, because our topic is that karma and past life theory therapy. Karma जो है ना, हर कोई यूज कर रहा है इस वर्ड को. इसके ओरिजिनल मीनिंग तो कुछ कहीं रह ही नहीं गया. It has been given a lot of more meanings. कुछ भी अनफॉर्चुनेट होता है आपके साथ, कुछ भी, तो अरे ये तो कार्मिक है, I have to go through it. So it's without thought we are using this phrase, this word. But karma is a lot more than just bad luck. कि अच्छा unfortunate things हो रही है तो ये कार्मिक है, पर karma is much more than that. वो आपकी डेस्टिनी नहीं है, आपकी फेथ नहीं है, तो उससे कनेक्टेड भी है, बट इट इज स्टिल नॉट योर डेस्टिनी. और कोई इवल फोर्स भी नहीं है कि आपकी लाइफ को खराब करने आया हुआ है. इट इज एन अनचेंजेबल लॉ ऑफ द यूनिवर्स. कार्मिक जो है, इट इज एन अनचेंजेबल लॉ. जो आप करोगे वो आपको मिलेगा. सो इट एक्चुअली encourages experience. It encourages learning. तो it's हम our human mind जो उसमें जजमेंट लेके आ जाता है कि आप बैड हो तो आप कार्मिक, आपको कर्मा फेस करना. इट इज नॉट दैट. whatever you are doing, it will get an answer. It will get an opposite. जो भी है, आप जो भी अच्छा कर रहे हो अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हो बुरा मिलेगा. तो जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा. तो karma ko you can regard as a bartering system within the spirit world.
So how you make arrangement with other spirits for your growth experience. तो आप जो है ना पहले से डिसाइड करके आते हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के आते हो, and you agree to play a specific role in somebody's life, जिसके साथ भी आप फिजिकली इनकारनेट हो रहे हो, तो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आप एक स्पेसिफिक रोल प्ले करोगे. तो इट कैन बी द रोल ऑफ अ बैड पर्सन ऑल्सो, एंटागोनिस्ट ऑल्सो, और इट कैन बी स्पिरिचुअल टीचर. कुछ भी आप डिसाइड करके पहले ही आ रहे हो. एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस, जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना के आ रहे हो, तो यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू द अदर सोल ऑल्सो. एंड द सोल यू आर वर्किंग विद, it will have to repay your favor in some other lifetime. तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट पहली सोल लेवल पे जो है ना बन के आता है बिफोर यू आर बोर्न इनटू दिस लाइफ. हम सोचते हैं कि कर्मा इज अ सिस्टम ऑफ जजमेंट. इट इज नॉट. इट इज नॉट अ सिस्टम. तो अगर वो जजमेंट का होता तो कोई जीतता कोई लूज करता, बट देयर इज नो लूजिंग. इट इज अ गेम ऑफ लाइफ जिसमें हम हारते नहीं है. हम सिर्फ लर्न करते हैं, हम सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को, और उससे हमारी एक्सपीरियंस बेटर होती है. सो कर्मा इज नॉट समथिंग दैट वी शुड ट्राई टू अवॉइड. इट इज एसेंशियल फॉर द जर्नी ऑफ द सोल. कर्मा के साथ ही हम जो सोल है बढ़ता है. जैसे अब ब्रीदिंग इज नेचुरल फॉर द बॉडी, ब्रेथ के बिना, ऑक्सीजन के बिना बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी. सेम सोल कैन नॉट एडवांस विदाउट कर्मा. कर्मा है तो आपकी एडवांसमेंट हो रही है. सो जो क्रिएशन, if there is no karma, the soul will not progress. And when there is no karma, the soul doesn't need to progress. जब तक सोल को प्रोग्रेस करनी है, कर्मा तो होता ही रहेगा. सो कर्मा जो है, इट इज द रिजल्ट ऑफ लिविंग थ्रू थाउजेंड्स ऑफ लाइफ. क्योंकि हमारी एक लाइफ टाइम तो होती नहीं है, बहुत सारी लाइफ टाइम्स होती है. हर टाइम हम रीइंकारनेशन करते हैं, और ईच रीइंकारनेशन में हमारी सोल एडवांस करती है. तो इट हैज अ नेवर एंडिंग कैपेसिटी टू ग्रो द सोल. It even after we have achieved enlightenment, our soul keeps growing. When you are when you are not in the body, you are a discarnate incarnate soul जो बॉडी के बिना होता है. You are connected to the source. जो सोर्स कॉन्शियसनेस है, तो यूनिवर्स है, उससे आपकी कनेक्शन बिल्कुल बहुत अच्छी तरह होती है. यू आर इन कंप्लीट अवेयरनेस कि क्या है मेरा वजूद, क्या है मेरी लाइफ, क्या है, व्हाट इज माय जर्नी. यू नो इट एवरीथिंग. और आप में कोई वो ह्यूमन इमोशंस भी नहीं होते हैं, एंगर, फियर, जेलेसी, हेट, कुछ भी नहीं होता. सो यू आर इन डिवाइन लव एंड वननेस. आपको मालूम है और कुछ है ही नहीं, कोई इमोशंस नहीं है, कोई रिलेशंस नहीं है. So when we incarnate in the physical form, जब हम physical form में आ जाते हैं, तो हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं. Divine origins जो है हम भूल जाते हैं. And यहाँ पे आके free from all that, cut off from all that, हमें एक पूरी life experience करनी है, learning the same thing. जो हमारा innate nature है divine love का, उसे हमें यहाँ आके सीखना पड़ता है. You have to learn how to be loving and compassionate, जो as a soul we are. पर एज अ ह्यूमन पर्सन, ह्यूमन बॉडी में जब हम आ जाते हैं, तो हम वो सब चीजें भूल जाते हैं, हमें दोबारा लर्न करना होता है. एंड दैट इज द चैलेंज ऑफ द सोल, कि आप भूल के फिर दोबारा उसका लर्न करने हैं. और उस जर्नी में बहुत सारी चीजें और अटैच हो जाती हैं, क्योंकि अर्थ का जो है एनवायरमेंट, इट इज डिफरेंट, टोटली अनफॉरगिविंग सा है. एंड देयर इज नो गारंटी कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, कि आप सीख लोगे कि यू हैव टू बी लविंग एंड कंपैशनेट. इनफैक्ट बहुत सारे लाइफ टाइम्स लग जाते हैं ये चीजें सीखने के लिए, क्योंकि एक लाइफ टाइम में, और मे बी नंबर ऑफ लाइफ टाइम्स आल्सो, यू लर्न टू जस्ट लव समबडी. एंड लविंग योरसेल्फ तो बहुत टाइम्स लग जाते हैं, बहुत लाइफ टाइम लगते हैं. धीरे धीरे वी ओनली लर्न. हाउ इज दिस past life karma created? Just look at that now. There are two types of karmas. एक तो होता है intentional, एक होता है unintentional. इंटेंशनल कर्मा है जो आप वो सोल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो किसी के साथ, तो वो आपका इंटेंशनल कर्मा है, कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग, और यू नो इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं. यू आर एंटरिंग अ न्यू लाइफ, तो और चीजें, और पीपल विल गेट अटैच्ड टू मी, तो सारी इमोशंस आ जाएंगे. तो यू नो दैट आई हैव टू गो थ्रू ऑल दैट. तो आप जान मुझ के इंटेंशनली वो कर्मा ले लेते.
बट अनइंटेंशनल कर्मा वो क्रिएट हो रहा है कि जब आप आ जाते हो यहाँ पे और लोगों से इंटरेक्शंस करते हो डे टू डे बेसिस में, तो वो आप वहां पे अनइंटेंशनल कर्मा क्रिएट कर रहे हो. So that depends on others' behavior towards you. What is your reaction? So when you get angry on the spur of the moment, तो आपने उसमें कोई ना कोई कर्मा क्रिएट कर लिया और उसका थ्रो बैक होएगा, उसको आपको उसका रिजल्ट भोगना पड़ेगा. सो आप उसको किसी तरह से एस्केप नहीं कर सकते हो और वो गो थ्रू करके ही आपकी ग्रोथ होएगी, तो वो करना ही पड़ता है. दैट इज द जर्नी ऑफ लाइफ. सो if you are hurting someone, if you are angry with someone, तो be ready to face the consequences. कि आपको भी कहीं ना कहीं उसको फेस करना पड़ेगा. But if you decide to be of service to others, if you act from your heart space, तो आपका good karma इकट्ठा हो रहा है, तो you will not have to go through all those anger issues or anything. अब ये कर्मा जो है, it is like a baggage that you carry. कहीं जाता नहीं है वो. मैं आई टू से दैट आवर सोल इज अ चिप. उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और वो नेक्स्ट लाइफ टाइम में दूसरी बॉडी में फिट हो जाता है चिप, और उसमें अब सारा कुछ रिप्ले होने लगता है. पास्ट कर्मा है तो वी हैव टू लिव थ्रू इट ऑल अगेन. सो इट इज इम्प्रिंटेड ऑन आवर सोल. जो भी कर्मा हम करते हैं, वी कैन नॉट एस्केप. सो व्हेन वी कम बैक इनटू दिस लाइफ, हम सारा अपना कार्मिक एक्सपीरियंसेस साथ लेके आते हैं. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक ही लाइफ टाइम में सारे खत्म करो. बहुत सारे लाइफ जिसके साथ आपकी कर्मा है और वो उस लाइफ टाइम में नहीं उसने बर्थ लिया है, तो आपका वो कर्मा रिजॉल्व नहीं होगा. सो देन व्हेन यू गो बैक, यू डिसाइड विद द सोल कि आई हैव टू रीपे यू ऑन दिस कार्मिक पॉइंट, सो वी हैव टू टेक बर्थ टुगेदर. तो सोल्स ना डिसाइड करके आती है कि अच्छा, हमने अब एक दूसरे का कर्मा खत्म करना है, अब नीचे जाके उसको खत्म करते हैं. अब वो उनकी किस्मत है कि वो और क्रिएट करते हैं या उनको खत्म करते हैं. दैट कैन नॉट बी जज्ड एट दैट टाइम. देन कर्मा जो है, इट मेक्स यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल ट्रॉमा, एंड दैट ट्रॉमा कैन अफेक्ट लेटर लाइफ्स आल्सो. जो सो कर्मा माइट नॉट बी द इश्यू. जो आपको वुंड्स फील होते हैं उसकी वजह से, वो आपके जो है ना चलती रहते हैं टिल यू रिजॉल्व इट कंप्लीटली. So it is like it is not something that you can do consciously. तो हमें मालूम ही नहीं है हमने क्या कर्मा किया हुआ है, हमने क्या क्रिएट करा हुआ है. तो ये नहीं है कि हम when we are born हमें पूरा पेपर पकड़ाया जाता है, ये आपके कार्मिक कनेक्शंस हैं, ये आपकी कर्मा है, ये आपने रिजॉल्व करना है. ऐसा कुछ भी नहीं होता. वी जस्ट डोंट नो कि क्या करा है हमने और क्या हमने कैसे बिहेव करना है, कुछ भी नहीं पता हमें. सो वी आर जस्ट, वहां से हम आ जाते हैं यहाँ पे उठ के कि यस, वहां मुझे पता है कि मैंने क्या कर्मा रिजॉल्व करना है. यहाँ के मैं भूल जाती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा, वाई हैव बीन आई बोर्न इन दिस वर्ल्ड, मेरे से ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वही हम सोचते रह जाते हैं. बट कर्मा जो है ना कहीं से रिजॉल्व होता रहेगा, अपने आप ही होता रहेगा. हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता. एंड यू नो, बिकॉज अब जो अर्थ की वाइब्रेशन चेंज हो रही है ना, तो सबके कार्मिक कनेक्शन जो है ना वो रिलीज होते जा रहे हैं. तो तभी आप देखोगे ना, देयर इज मोर एग्रेशन इन द वर्ल्ड नाउअडेज, क्योंकि जो भी पुराना है वो सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि अर्थ इज हेडिंग टुवर्ड्स अ शिफ्ट. इफ यू रिमेम्बर, आप लोगों की एक बारी हुआ था पहले कि December 12, 2012 द वर्ल्ड विल एंड. बहुत इसकी वो चली थी बीच में. It was not an ending, it was a beginning. उसमें बिगनिंग ये हुआ था कि द शिफ्ट, हम लोग 3D में रह रहे थे. 3D इज दैट वी आर मोर इनटू द वर्ल्ड. जो अपने फीलिंग्स हैं उसमें सब घुसे हुए. वी ऑपरेट फ्रॉम आवर ईगो माइंड. तो 3D वो था, सिर्फ हम सर्वाइवल के उसमें था. नाउ फ्रॉम दैट 3D वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टू अ 5D डायमेंशन. और 5D क्या है कि you are living in a very high level of awareness. You are living from your heart center. Your soul is awakening. Your spiritual gifts are awakening. अब आप देखोगे ना, पहले इतने लोग नहीं थे who were into all this spirituality and meditation and all. Only in the past few years, these things have literally bloomed up. हर जगह मशरूम हो गए हैं, लोग आ रहे हैं, सिखा रहे हैं. And people also interested in learning.
ये नहीं कि नहीं nobody is into, everyone अपने आप ही जागृत से हो रहे हैं कि हाँ हमने समझना है ये क्या चीज है. तो दिस इज फिफ्थ डायमेंशनल. कोई ऐसी जगह नहीं है, इट इज जस्ट योर वे ऑफ बीइंग दैट यू हैव शिफ्टेड टू अ हायर लेवल ऑफ थिंकिंग. क्योंकि अब जो है ना वर्ल्ड इज हेडिंग टूवर्ड्स दैट ascension, you can say, level. So you when you are in that fifth dimensional state, so there will be more awareness. जैसे हम पहले सुनते हैं कि पुराने जमाने में अटलांटिस पे the people used to live, they were very enlightened. उनके जस्ट थॉट प्रोसेस से एक दूसरे को समझ जाते थे, उनकी एसेंशियल बहुत हाई थी. तो वर्ल्ड में भी हेडिंग टूवर्ड्स दैट अगेन. फिफ्थ डायमेंशनल जो है उसी की तरफ हमें लेके जा रहा है. एंड सिंपल थिंग ऑफ बीइंग इन द फिफ्थ डायमेंशन इज बीइंग माइंडफुल. सो माइंडफुलनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और आजकल वही लोग पीपल आर प्रमोटिंग दैट बी मोर माइंडफुल अबाउट एवरीथिंग. बस जितना माइंडफुल रहोगे, जितना अवेयरनेस रहोगे, you are in a calmer state of mind, and that is the fifth dimension. So everyone has the capacity to be in that. There you are more like you've let go of everything, you're more happy, you're more understanding. आप balanced रहते हो. कोई ये नहीं कि बहुत बहते जाते हो, बहुत परेशान हो या बहुत खुश हो, वो नहीं है. You are in a very balanced state. So by simply practicing mindfulness, you are in the fifth dimension. So be present in the now moment. वो बहुत important है fifth dimension के लिए. अच्छा, how do we stop creating new karma? क्या हम और कर्मा ना क्रिएट करें, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वेरी सिंपल. इट इज लिविंग फ्रॉम योर हाईएस्ट इंटेंट. या आप हाईएस्ट अपनी कैपेसिटी पे कैसे, हाईएस्ट अवेयरनेस में कैसे रह रहे हो, कैसे रह रहे हो. तो वो यू बिकम मोर माइंडफुल ऑफ योर एक्शंस. तो आप फिर जब किसी ने कुछ आपको बोला है, आप रिएक्ट नहीं करोगे इंस्टेंटली. यू विल गिव अ रिस्पॉन्स लिटिल लेटर. तो वो जो लड़ाई है या कुछ कार्मिक बिल्डअप है, दैट गेट्स नेगेटेड. सो द मोर यू कंटिन्यू टू एक्ट फ्रॉम अनअवेयरनेस, यू आर गोइंग टू क्रिएट मोर कर्मा. तो जितनी अवेयरनेस आप लाओगे लाइफ में, योर कर्मास आर गेटिंग लेसन. सो कई बार जो है ना, पास्ट लाइफ कर्मा कैन शो अप एज इलनेस ऑल्सो. तो इलनेस को आप झेल रहे हो, तो यू आर वर्किंग आउट योर कर्मा. तो इट इज लाइक वॉट एवर हर्ट यू आर फीलिंग इन अ पास्ट लाइफ, तो वो यहाँ पे रिलीज होता जा रहा है थ्रू योर इलनेस. सो वो भी आपका जो है ना कर्मा ही कंप्लीट कर रहा है किसी तरह से. एंड इट हैज द पोटेंशियल टू चेंज अ पर्सन. कार्मिक इलनेस जो आती है, अब बंदा लाइक कुछ भी नहीं हो रहा है, सडनली यू स्टार्ट फीलिंग इल, कोई बीमारी लग जाती है, वो अनलेस योर लाइफस्टाइल आल्सो मैटर्स. अगर लाइफस्टाइल भी अच्छा है फिर भी कोई बीमारी है, तो इट इज अ कार्मिक इलनेस. तो वो आपका लाइफ पाथ चेंज कर सकती है. बिकॉज जब कोई इलनेस आती है, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गॉड एंड अच्छा व्हाट इज लाइफ, व्हाई हैव आई गॉट दिस, ये सारी थॉट्स आने लगती हैं. तो यू कॉट दैट पाथ. अब आगे उसमें बढ़ते जाओगे, तो यू आर रिलीजिंग योर कर्मा इन अ बेटर वे. So, and past life helps you to understand. When you go through past life therapy, why am I having this illness? तो कई बार हमें समझ आ जाती है. I'm not saying every time आ जाती है, but कई बार समझ आ जाती है. And just the thought of taking a past life session, it actually opens your thought processes. So उसमें also you have the potential to release the karma जो भी कर रहा है उसको. So karma is not something to worry about. It's just that we are clearing something. And कोई हम रेस में नहीं है. कर्मा जो है, it is not out to get you, it is not out to make you small or destroy you, anything like that. कुछ भी नहीं है. अब जब टाइम राइट होएगा, वो अपने आप आराम से अपने आप को डिसॉल्व कर लेगा. एंड व्हाट वी डू, वी कीप ऑन वरिंग, वी कीप ऑन थिंकिंग, अरे कैसा कार्मिक कनेक्शन है, ऐसा क्यों हो रहा है. यू कीप ऑन वरिंग अबाउट समथिंग जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है. तो आप और अपने आप को रोक रहे हो फ्रॉम डिसॉल्विंग दैट कर्मा. सो इट्स बेस्ट टू लेट गो ऑफ वरीज. वरी करने का कोई फायदा नहीं होती है, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि क्या कर्मा हमने किया हुआ है और कैसे उसको डिसॉल्व करना है. कुछ हमें मालूम ही नहीं है. तो व्हेन वी लिव at a highest level, like when we are living in a state of complete kindness, of being compassionate to people around, being of service to people around, we are dissolving karma. जो भी हमारा past life का weight है,
उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं. हमें ये नहीं सोचना कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं बाय बीइंग गुड. यू लिव एट योर हाईएस्ट लेवल. You do what you can do the best. There's no need to think कि अच्छा I am doing the best, so I'm dissolving. Then you are like bartering system यहाँ पे कर रहे हो, वो नहीं चलेगा. Just being living at your level अपने आप जो है कर्मा डिसॉल्व हो जाएगा. आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कर्म योग भी कहते हैं कि हम योग करके काम करके योगा इज डूइंग समथिंग, हम कर्मा डिसॉल्व कर रहे हैं. So it's just your basic good nature that has to come up to the surface. That's all. उसको और कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है सोचने की कि नहीं आई हैव टू बी नाइस टू अदर्स. दैट इज नॉट. यू मस्ट बी. इट शुड बी योर बेसिक नेचर. सोच के नाइस नहीं होना होता. सो वी हैव टू स्टॉप फोकसिंग ऑन क्या किया होएगा हम इसलिए यहाँ पे फेस करने, उसके ऊपर हमें मालूम ही नहीं है तो उसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट करें, क्यों वरी करें. You just have to live your highest potential, being in your basic goodness, bring it up, and karma will dissolve. So when we are journeying into the past life, we are accessing we can understand the cause और उसका effect क्या हो रहा है, we can experience it. You know, past life is like archaeology. आप उसको माइंड को डिग कर रहे हो और उसमें से निकाल रहे हो वो मेमोरी जो आपको जो है दे आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम ग्रोथ और हेल्पिंग यू टू ग्रो. यू कैन रिमेम्बर दोज. तो जो आपके एडिक्टिव पैटर्न्स है, फोबियाज है, अनएक्सप्लेन्ड फियर्स है, वो सारे आपको यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर. क्योंकि रूट कई बार वहीं पर होता है. सो एंड इट यू कैन एक्सेस इट. क्वाइट पॉसिबल हो जाता है कि you can access it. Your conscious mind is just a representative of your inner mind. When you are able to go into that inner mind, so you become familiar with everything over there. So you are connecting to your higher aspect, going into your inner self. So your past life helps you to connect to that higher self. And the higher self has the knowledge of everything, of what you are, जो वो chip है वो. So by connecting with its energy, आप कई अपनी चीजें जो है ना डिसॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे चेंजेस लाइक आई शोड यू इन द एग्जांपल्स बिफोर, बहुत सारी चीजें आपकी जो है ना यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है. बट नेगेटिव कर्मा नहीं हटेगा. उसके लिए आपको यू हैव टू लिव दैट लाइफ ऑफ बेसिक गुडनेस. ओनली दैट विल हेल्प यू रिलीज योर नेगेटिव कर्मा. बट पास्ट लाइफ से आपको समझ आती है कि व्हाई आई डू द थिंग्स दैट आई डू, व्हाई डू आई रिएक्ट इन सच अ वे टू दिस पर्सन बट नॉट टू दैट पर्सन. तो ये कई बार जो है ना उसमें से समझ आ जाती है. Like I had a case just yesterday, and that girl, on the surface, she was very confident, and in fact, she came across as being very egoistic as well. So, and then she was shared with me that when she wakes up in the morning, she has a lot of feelings of anxiety, unexplained ones. कुछ समझ नहीं आती क्योंकि on the surface she's a like working well, dentist है, has a good job and everything. Life is also good. But she's not married as yet. She's still unmarried. So uska when we went into, and you know, she gets कई बार morning में ना she sees some wound निशान जो होते हैं ना एक तरह के on her body, जैसे कि किसी ने मारा हो उसके निशान रह गए हो, तो वो उसको फील होता है कई बार on her, not every day but sometimes. So in a past life she saw herself as a very well dressed, जैसे कि वो vintage time में राजा महाराजाओं के टाइम में इन द फॉरेन लैंड शी सॉ हरसेल्फ इन मैनर, बड़ा मैनर हाउस में रहती हूँ एंड वेरी वेल ड्रेस्ड इन अ गाउन एंड ऑल, बट दैट शी इज वेरी fearful and she feels that she's just been raped or something. She's faced a lot of aggression. But then next she sees that she's in a hall, big hall, and she's surrounded by a lot of men. And it's like a party going on. Everyone is drinking, and then she feels that one of them is her husband, and she's very fearful of him. And then there is another room where there are lots of ladies, and she goes there, and she feels that she's crying from inside, but she has to laugh and be like mix up with them, be social with them. So then she realized that her life was very bad. Her husband was very aggressive, violent. He used to beat her up. So she was living in that state of fear. And she didn't have any way of resolving it. No other family she could feel, no children, no other family members. So it was just her, and she had to face that. And she was like a possession for him.
ओनरशिप मेरी है ये, तो मैं इसके साथ जो मर्जी कर दूँ, वो sort of attitude was coming through. And then I asked her to see 2 years later. She felt that she was alone and the husband was not there. So I said, okay, go back and see. And then she felt that she killed him. She saw herself in the kitchen holding a knife full of blood, and he was lying there on the floor, and she felt that she had killed him. And then she just sat down over there. And then the other servants came and they saw. They didn't say anything to her. They didn't blame her or anything. And they just took the knife from her. And then she felt that she had been put into an asylum. She's imbalanced. Her mind is imbalanced. So she spent a number of years over there. And at her death, she felt that she'd come back home, and she passed away alone at home. There was nobody there, in a very sad state. So she carried that sadness into this life through her dreams. It was not there in her life. This life she felt was quite good. But in her dreams, she could feel that anxiety. So morning, she used to wake up with that feeling of anxiety. So it just happened yesterday, but I'm hoping that now she'll not be facing that. So I still need to get her feedback in a couple of days or so, but I'm definitely sure it will help her to resolve. So that was all I wanted to share with all of you. If anybody has any questions, you're most welcome. Well, I have a lot of questions. Yes, please. But okay, one question would be, does it always work, this past life regression? It doesn't work that you don't go into the past life every time, but just going through the process helps to some extent. But do you think it's always real, or it can be a dream, a kind of fantasy which you have made up? You feel that it is a fantasy, but then in a fantasy, you can imagine anything. Why did she just see that she was being like tortured by that Say that person? again. You feel that it's fantasy, it's imagination. I might have seen it somewhere in a movie, but then movie में इतना सारा कुछ और देखा. There are so many other things. Why just that thought came to you? So if that thought has some relevance in your life, that is why it came to you. So it is not imagination. कुछ thought आ रहा है आपको, तो it has a relevance. Yeah, but like say, okay, you have a pain in your chest or something, for example. So then you're imagining that in some other life that pain is coming from maybe a knife wound or something. Look, if the session does not help you release the pain, then you have imagined it. If the session has helped you release the pain, then it was something coming from the past. Uh-huh. Okay. So the results show that you have been into a past life. And okay, then the other thing is like, suppose you okay, suppose it's bad karma that you have a bad karma in the sense that you let's say you get killed by your husband or wife, right? Like how one of the examples you gave. So um so it is your karma that you're going through, that it's just for you because of your karma that you're going through that bad experience, or is it because like, and that person who killed you, who's hurting you, uh, it is it is because of his karma that he is doing it to you. So there you have to understand that maybe you have done a similar thing to him in a past life. Okay, if you have done it and then that person is doing it to you now, Yeah. and so then that other person does not have to, his karma also gets released because he is doing it because of something you had done. So then we sometimes we have to give healing as well. Like the case I discussed earlier, that she saw her wife killing the husband in the past life. So here she immediately became aggressive. Immediately became Aggressive, that how could he have killed me? hmm. So I'm not going to leave him. She became that revengeful attitude usme aa gaya immediately. So then I had to do healing for her so that she releases that revengeful attitude. Okay. मतलब उसमें इतना जोश उस टाइम आ गया था कि मैं अभी जाके उसको मारूं कि उसने मुझे कैसे मारा उस लाइफ टाइम में. But what So about then the other person? Like it is his karma because he killed her in that life.
Yeah. So he So was now, doing something which he could not help. He was yeah. doing it because without Yeah. he Yeah. could not do anything So else. now That is look, his, there is one way that now he killed, now next lifetime you kill, next lifetime you kill, next time ये चलता रहेगा, वो नहीं होता. You have to learn to adjust to live. So maybe अब killing के बाद थोड़ा सा aggressiveness में आ जाता है. Then next lifetime में the aggressiveness will come down. So each lifetime you are learning to adjust with that soul, and you'll be kept putting with that soul again and again till you learn to adjust. oh, so then the thing process keeps repeating like that. Absolutely, lifetimes keep That means repeating. he is actually adding more karma, and then he gets again, it So, goes into that loop, and so again the other if person wants. awareness come, like the awareness came to this girl, the wife, she got the awareness that okay, past में वो हुआ था, अब मुझे इसको आगे नहीं बढ़ाना, तो she calmed down. Now, if even one partner calms down, तो आपके कर्मा कम हो गए. You will not be put into that same situation. अब next lifetime में husband wife नहीं होगे, maybe brother sister होंगे, तो उसमें जो है ना टेंशन कम हो जाती है. Husband wife का relationship is the most aggressive one at times. तो उसको फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में कम, अगर आप एक पार्टनर ने भी समझ लिया कि अच्छा हम कार्मिक कनेक्शन में है, अब मुझे शांत हो जाना है, तो आप शांत हो गए हो, हस्बैंड नहीं हुआ या वाइफ नहीं हुई है, इट्स ओके. नेक्स्ट लाइफ टाइम में यू विल नॉट बी पुट एज हस्बैंड वाइफ, यू विल बी पुट एज लाइक अ डिस्टेंट रिलेटिव, कोई चाचा भतीजा हो जाएगा, कोई ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ कर्मा रह गया है तो वो वर्कआउट करना है, तो अब इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना है. अच्छा, प्रणाम मैम. हाँ जी प्रणाम हाँ, जी. आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank मैं you. है ना अभी 1 जून से 5 जून तक हिसार हरियाणा में यही पास्ट लाइफ और विजुअलाइजेशन का सेशन हो रहा है ओशो फ्रेग्रेंस की तरफ से. तो मैं बहुत साल पहले ही जाना चाहती थी. मैंने विजुअलाइजेशन का 2.5 दिन का प्रोग्राम अटेंड करके मैं वापस आ गई थी. उन्होंने इसको महाजीवन प्रज्ञा दी है नाम. तो मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि उस समय समझ नहीं थी. जैसे आपने बताया रिलेशन या एग्रेसिव रिलेशन हस्बैंड वाइफ के, तो मुझे भी बहुत बार ऐसा लगता था. मेरी टीचर्स भी बोलती थी कि जब इतना एग्रेशन होता है जरूरत से ज्यादा घरेलू हिंसा, और उसके बाद हस्बैंड आपको सॉरी बोलते हैं, दैट मीन्स है कि आपके कर्मास पास्ट लाइफ के जुड़े हुए हैं. और अच्छी बात यह है कि कुछ अच्छे कर्म हुए हैं जिससे आपकी सांसों की डोर जुड़ी हुई है. नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि बीच मझधार में भी छोड़ के चले जाते हैं, तो संसार से भी डिफिकल्ट लगने लग जाता है. तो उस समय समझ नहीं थी क्योंकि स्पिरिचुअल इतनी नहीं जुड़ी हुई थी गुरुओं से, तो मैं नहीं करके आई. मैं डर गई कि पता नहीं क्या मैं देख लूंगी, पता नहीं क्या होगा. ये भी जरूरी नहीं है कि मैं पास्ट लाइफ में जा पाऊं, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाई. तो अब गुरु ने फिर से मौका दिया है, तो मैं जा रही हूँ करने के लिए ये प्रज्ञा. और लेकिन जो मेरा संसार का लाइफ है ना मैम, वो बहुत चेंज हो गया. आप मेविन से जुड़ी, ओशो शैलेंद्र जी से, गुरुओं से जुड़ी, मेडिटेशन सीखा. एक तरह से ना वो जाने से ही रास्ता खुल जाता है जी. You तो get अब more things हाँ, जैसे आपने अभी बताया ना कि आप अपने कर्मों पे ध्यान रखिए, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. तो मैं अवेयर बहुत हो गई हूँ. ये मैं मतलब अपनी तारीफ नहीं, एक्चुअल में मैं अपने कर्मों से अवेयर बहुत हो गई हूँ. तो ऐसा बहुत चेंज हो गया लाइफ में. जो मारपीट थी या गाली गलौज थे, वो सब ना के बराबर हो गए. लेकिन जब भी होते हैं ना, तो मैं कभी कभी सांसारिक दृष्टि से मुझे बोलना पड़ता है जोर से, नहीं तो मैं नहीं बोलती हूँ. और आराम से उसके बाद भी उस सोल के लिए प्रेयर निकलने लग गई हम. जब आप बोलते हो ना, जैसे आप कह रहे हो जोर से बोलना पड़ता है, तो अदर पर्सन हैज टू हियर दैट, इसलिए आप बोल रहे हो, क्योंकि हम अपने आप नहीं चल रहे, हमें कोई चला रहा है. अब दूसरे को भी समझना है, उसको भी चेंज होना है, तो यू आर रिएक्टिंग टू दैट, यू आर हेल्पिंग हिम टू दैट. जी. तो वो दूसरे को चेंज होने का है ना, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, वो मैंने प्रेयर और ग्रेटिट्यूड में जो रहना सीखा ना, उससे वो चेंज हो रहा है कि वो मेरे कर्म को काटने के लिए वो ये सोल मेरे हस्बैंड के रूप में मेरे जीवन में आई. तो मेरे हस्बैंड का तो कोई दोष है ही नहीं ना. मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट हैं और भगवान ने उनको ही चूज कर लिया, क्योंकि पड़ोसी तो बोलेंगे तो हम कहेंगे तुम जाओ अपने घर, दरवाजा बंद कर दो. हस्बैंड से तो हम कहीं नहीं भाग सकते, या वाइफ से कहीं नहीं भाग सकते. तो फिर मुझे उनके ऊपर ये रहता है कि मैं उनके लिए प्रे करती हूँ. जैसे प्रेम से सब काम करती थी वैसे ही करती हूँ. लेकिन हाँ ठीक है, वर्बली जो बोलचाल कम हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन पहले मैं बहुत डरती थी.
और बहुत ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंट, पावर, स्वतंत्रता सब कुछ खत्म हो चुकी थी। मतलब 2-3 बार मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया कि मेरे को ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, लेकिन अब लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। जी मतलब जी जी, बढ़िया। मेरे तो आसपास जो का समाज जितना भी बोलता है कि हाँ, अवेयरनेस में हो ना, उतना आप हाँ। अपलिफ्ट हो जाते तो हैं। अब मैं देखना चाहती हूँ कि सदगुरु मेरे को सहयोग करें इसमें, कि अब मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसे मैंने कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे ये हुआ। लेकिन ऐसा बिलीव है कि ऑलमोस्ट वो कट चुका सब। अब उसकी तरफ जा रहे हैं हम, मुक्ति की जी, तरफ। मुक्ति मतलब वेरी सांसारिक गुड। दौर की। तो थैंक यू सो मच। मुझे आपका आज का सुनना भी बहुत अच्छा लगा। जी और जी, जो भी थैंक यू। गाइडेंस मुझे चाहिए कि वहाँ पे भी टीचर्स देंगे, लेकिन मैं आपसे पर्सनली भी बात कर जी लूंगी। जी, बिल्कुल। सो अश्मी जी, यस, ये आपने 2-3 बार ही बोला, हाँ जी की थी। हाँ जी, नमस्ते टू ऑल, नमस्ते टू यू स्पेशली। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, पूरी गायब हो गई। यस विनय, she's dropped out. Vinay, if you would like to ask something. Yeah, sure. I was actually wanting कि वो आशमी जी हैं, मुझे लगा कोई बात है। अच्छा, मुझे इसमें मेरा भी कॉन्फ्लिक्ट अभी चलता है कई बार। हालांकि मैं आपके साथ काफी आपने काफी मेरे साथ सॉरी, काम भी Ashmi, किया है। just हेलो, a minute, Ashmi. कैन यू हियर मी? Yeah, yes, Vinay, please continue. So basically, हेलो। sometimes it so happens कि जब PLR के बारे में जब बात करते हैं तो मेरा माइंड कई बार इसमें ऐसे अटकता है कि क्या मैं अगर PLR करने के बाद मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से हट रहा हूँ। I'm just avoiding responsibility. Okay, ठीक है, this is because of my past karma. Now that is why it is happening because of this past programming. And secondly, जो ये तो कंसर्न था। सेकंड मेरा एक क्वेश्चन ये था कि कई बार एक if someone is working very hard and just at the nick of the time, वो चीज आपके हाथ से निकल जाती है। You are about to reach your goal, you are about to accomplish something, and you are hoping something is happening, good is happening, but at last moment पे वो आप you feel that this is not for you. तो ये एक कोई स्पेसिफिक पैटर्न है जो PLR में आप देख सकते हो कि despite the best efforts, if things are not coming your way, वो किसका साथ है? वो कौन सा कर्मा एक कॉमन हो सकता है उसमें? तो वही ऐसे ना कि we have to learn some lessons. अब ना आप पैटर्न देखो, why is it getting repeated? हर टाइम क्या थॉट आता है आपको which stops you from getting what you want at the last moment. So it has to be individualized. वो आपका individual, वो अपना होएगा कि what is your thought process that we need to understand. कोई fears है कि ओ अच्छा पता नहीं मिलेगा, right at the last moment you then are like you don't get it. तो वो individually जो है ना वर्क करके we'll have to understand what are the fears that are stopping you. So, थोड़ा सा we have to let go of things also कि अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा, हम बहुत ज्यादा वो हो जाते नहीं, my life depends on it, तो होना ही चाहिए, तो उससे भी चीजें जो है ना हाथ से फिसल जाती हैं कई बार। Okay. उसके लिए we need Okay. to work more on this. हाँ जी। Are you available for a session today? Can I come? Today I'll just let you know if I'm available ठीक है, today. perfect. हाँ जी। Ashmi ji, please continue. I'm sorry you lost the connection ना, तो मैंने नहीं शुरू कर दिया। Ashmi ji, तो फिर I think hang हो गया है। हाँ जी Ashmi जी, please, फिर चले गए। नहीं अच्छा, somehow कनेक्शन किचन में लूज हो रहा है। हाँ हाँ जी जी, मैंने एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था और जी जी, कुछ भी नहीं दिखा, कुछ जस्ट ओके ब्लैकआउट। बहुत देर कोशिश की, टीचर ने भी, मैंने भी। क्या जी जी। रीजन हो सकता है? आई स्टिल वांट टू फाइंड आउट द रीजन। There are many reasons. You were not relaxed enough. You had some tension in your mind, तो आप पूरी तरह relax नहीं हो पाए थे। एक और हो सकता है it is not time for you to go there yet. कई बार होता है it is not in our hands. ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में कि आपको past life में ले जाना है। I can take you to that point जहाँ it is possible for you to connect to the past life. Okay? अब उसके आगे the universe takes over. अब यूनिवर्स की मर्जी आपको दिखाना है या नहीं दिखाना।
कई बार you come with the concept कि I want an answer for this question. मेरा इस aspect of my life is not working out. I want to understand it. और सेशन में आपका हो जाता है पर आपको उससे कुछ रिलेटेड नहीं मिलता. तो it is the universe is जो उसने आपको दिखाना है वही दिखाएगा. आपके हाथ में नहीं है कि मुझे जाना है, मुझे देखना है. You can try. Okay? ट्राई करते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए, बट जाना नहीं जाना, यूनिवर्स हेल्प्स. जी मैम, जैसे गुरु नहीं, के तो साथ symbolism श्रद्धा है के क्या? साथ भी कि क्या? जाना है. हाँ जी अश्मी जी. अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, सॉरी हाँ, मैं हाँ. बीच में इंटरप्शन हो रहा है, सॉरी. कोई बोल रहे हैं, तो मैं ये कह रही थी कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये इसके पीछे कोई सिंबॉलिक रीजन है. आई मीन आपने कहा यूनिवर्स नहीं बताना चाहता, पर क्या ये भी है कि देयर इज maybe मोर, और मे बी देयर वाज नथिंग? नहीं, maybe there was nothing, you don't need to see it. एक तो वो होता है, maybe you still have to go through whatever you're going through. अभी आपका टाइम नहीं आया उसको रिलीज करने का, you've not learned your lesson, तो तभी आप नहीं जाते हो. Okay. And sometimes you don't need to see the past life at all, इसलिए आप you're not going into it. So there can be so many things, but वो हमें explain हम नहीं कुछ. These are something not okay. हम I can definitely say no. You come to me, I'll take you into your past life. I cannot say that. I can give it a try. I can try to help you go into it, but it is not in my hands that you will see the past life. But just going through the process, that also helps. Whatever your issue, so I normally understand what is the issue that you're going through, and I try to help you release it if you're not able to go into the past life. So healing, I call it healing through regression. I don't call it past life regression that I'm doing. So आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें कुछ ना कुछ तो हीलिंग हो जाएगी by going through this session. I hope that answers you. Yeah, yes, Ram Mohan Shetty ji, you have raised your hand. Ruchika Gai also is. Yeah, Meenu ji, Thank you. some incidents of current life are based on some past life. I'd done a reading. Thank you. Like there was a false political case of Mahanagar. At past life, I was Tukaram. There 2-3 readings done because through Nadi and all. But how the dissolution happens, how much session it takes to resolve all this? Because 4-5 I have seen, which is current day issue. Mahanagar happened 18 years ago. This was the press which was attacked maximum by political party. And for BJP, I was there because when I was active that. And there are a lot of other past lives which some I have read. So how much it takes to resolve all this? Because currently. So did you get any resolution from the sessions that you did? No, I've done a 2-day course of past life. I went into that, but resolution happened that I was in Kerala, and resolution happened that some people approached me to be a trustee of the temple. In one life, I was eating all the money. I didn't marry. I had a lot of means I conned a lot of women and a lot of things. That's why this life I'm not married. A lot of village, in spite of being a highly qualified double postgraduate and other. So 2 lives, 3 lives I've known it. When this life, yeah, I did a Akashic reading. They said, yeah, you have thrown the keys of a locker outside through a money lender. That's why your money is gone. 2, 3, Okay. 4 readings I have got. Okay. Because 2, 3 readings were like that by somebody else. On the way, I got it. So look, we've had a number of lifetimes. Abhi, this is one lifetime. इससे पहले कितनी गईयां हमें नहीं पता. It can be thousands also. So you've resolved some issues. अभी और भी होने होंगे, इसलिए you're not able to resolve them. But then how you're working over here on those issues, that also matters. How you're approaching them, how you like healing them. उससे बहुत फर्क पड़ जाता है. Because 4 lifetimes I've got to know about it. Okay, that's amazing. That is, and that's affecting the entire thing about it. Career has been up and down, and a lot of things because I've got to know through reading. I went to one person, he said, I will do a reading free, and he was a soul, and he said, one life you have to corrupt. And I put the case for discharge, and only I, not of the other. And within a year it got discharged, but the psychic imprints of 2004 Ashadi Ekadashi is still there, still haunting me, still to personal.
Do you do something about forgiveness? Do you do any forgiveness? No, not much because I've read the prayers about forgiveness, but not So much. that is essential because जो भी हमने past karma किया हुआ है हमें नहीं मालूम, पर अगर हम forgiveness करने लग जाए, self की especially, so it helps to resolve more issues. Okay. And it should be a constant feature, like a daily prayer in your life. कि forgiveness मैंने करनी है. I'm asking forgiveness from others. I'm forgiving them. Plus, I'm forgiving myself as well. So, ये three steps are most essential on a daily basis to come out of your karmic, whatever it is happening in your life. Okay. So, वो आप add कर सकते हो. Okay. Yes, रुचिका जी. मैम एक तो मैंने सॉरी स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं कर पाई, मेरा आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन जी 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 कोई बात नहीं. हाँ जी. तो लेकिन मैं करना में आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज़ I'm sorry, I can't hear you clearly. थोड़ा सा ऊंचा बोलिए. हाँ वो हेलीकॉप्टर जा रहा था. तो द थिंग इज कि मेरे को I have to, I have had I'm staying alone. I have no objection from my, family or my husband or my children. They are just supportive, and a few friends who have suggested you. So they are very, very nice and kind. But whenever I am going, I go to Gurudwara and I used to go to this Hashtag Club, where I feel I am being ridiculed. Every time I go back, I think I'll socialize, this is my group. But somehow or the other, the impact comes that I better be at home alone, in my energy. So is it some kind of, my fault or my karma? I believe in Buddhism also. I practice everything. I am not bad. I am nice. But then when it comes to mixing with people and, getting their, appreciation, some neighbor has displayed my image such that I am disrespected, and that causes me a lot of, I start crying, I start, going into my shell. Everybody is supporting me. Even the environment supports me. Many people in the groups also do, but then it lands up every time I'm going there, I get a very heavy feeling, so I retrieve back to my loneliness. So is it correct, or what should I look, you are doing whatever you can. You have art of living also, you have joined, you are saying you're part of it also. But again, as I suggested to Ram Mohan ji, forgiveness बहुत जरूरी है. Self and living in that attitude of gratitude. Just these simple steps. बार I do that. बार I approach those एक बंदे. People were staring at me since I'm single, and maybe they call me beautiful. So in Hashtag Club, one person was going on staring, and that neighbor causes all problems to me. Saying samne, just because I happened to tell something about her son, I asked for forgiveness. My husband has come and sorted out, but she's not ready. So somehow the issue, comes up again and again. So I am distant from them. If you could contact me personally, I'll help you out. Yes, ma'am. Please. Can you share your number? Yeah, I'll share my number there. You can contact me. Naveen ji was also asking for the number. I'll just put it on the group. Yes, Sanju ji wanted to ask something more. Yeah, well, actually, I wanted your number also. And I also had a past life regression, and then my problem didn't get resolved. So that's why my questions were around that. And I thought maybe, well, I can call you up and then just discuss it quickly. Yeah, because as I said, no, it is something like individualized. Everything, your life is your unique life. Right. So sometimes general can help also. But in fact, Shabana ji has suggested that I should take a past life session also online morning. So I said it needs at least an hour. 1 घंटा सवा घंटा तो लगेगा उसमें, and I don't want anybody to join after I start, because then the energy gets disturbed. So everybody has to be present at 8 o'clock, and then only we can do a session. So she says, okay, let's look into it. So we might plan it out online also, because I did a session 10-15 days back also online, so it went quite well. Like I had 7 people and 5 of them were able to see something in the past life. And the amazing thing was in the past, they all saw around 1947.
So that was really amazing. All 4 of them were able to see 1947 connection. So it can be done online also, but personally, of course, it's much better. Oh, so you suggested 1947 as a date for them to go back to No, review? I did not suggest it. I did not have it in my mind also. But You all- automatically, all of them picked up 1947. So connection हो जाती है ना, तो इसलिए when somebody enters later on, the energy gets disturbed. Even on online, you're all connected together. Wow. Ma'am, लीजिए ना एक session please, because for us who are not very financially okay, we cannot take one-to-one interview with you. So if you can take Financial issue is not an issue with me, so it's perfectly okay. You're most welcome for a personal session. Thank you. Please share your number then. Yeah, I have put it on the group, on the chat. Yeah. Anybody else? Any questions? Otherwise, we wind up. Shabana? Yeah, I'll just. I missed this. I just came online. Oh, hello, Hanji Philomena ji. Yes, you just came on. Yeah. So what did I miss? I mean, anything? Did you have a session today? Yeah. No, I didn't have a session today. Just had give a talk on past life and karma. So there's a recording.